गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड ग्राफ ऑफ कॉस एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स ये बताया था हमने। सो वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स इज 1 and anto between minus pi by 2 plus pi by 2. So range of sine inverse x is a function and range of sine inverse x is a minus pi by 2 plus pi by 2, and cos inverse x, so this is a 0 to pi, and tan inverse x is a minus pi by 2 to plus pi by 2. And next tan cot inverse x, cos inverse x and sec inverse x. In this interval these functions are inversely. So formula sine inverse sine theta is equal to theta when theta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. Cos inverse cos theta is a theta when theta belongs to 0 to pi. Tan inverse tan theta is a theta when theta belongs to minus pi by 2 plus pi by 2. So some few examples. Next cosec inverse cosec theta is also theta. Similarly, so example, evaluate sine inverse half. So first write sine inverse half में sine की वैल्यू किसको, what is the value of half in sine? Sine pi by 6, and pi by 6 belongs to, by using this identity, sine inverse sine theta is a theta when theta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, and pi by 6 belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. Therefore this cancel out, so pi by 6. So sine inverse minus half is a pi by 6. So next, what is the value of, next example, what is the value of cos inverse 1 by 2? So cos inverse, we know that 1 by 2 in the terms of cos value is pi by 3, cos pi by 3, and this pi by 3 belongs to 0 to pi interval. कॉस की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई. तब यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज ए थीटा. सो सिमिलरली नेक्स्ट, दिस इज अ पाई बाई 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन इनवर्स माइनस 1 by root 2. साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 किसमें होती है, माइनस पाई बाई 4. साइन माइनस पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. सो आंसर इज माइनस पाई बाई 4. So by this example you can solve exercise 2.1 same way. And now next formula
some formula. Sine inverse x, this is equal to cosec inverse 1 by x. Cosec inverse x, this is equal to sine inverse 1 by x. जैसे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में क्लास 10 में पढ़ा था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो इनवर्स में कैसे चलेगा आपका, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स. नेक्स्ट सेम वे tan inverse x, this is equal to cot inverse 1 by x, and cos inverse x, this is equal to sec inverse 1 by x. So इस टाइप के भी 6 फॉर्मूले आपके पास होंगे, उनको भी आप लोग लर्न कर सकते हैं जो. एंड नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी, 3 identities are there. Sin inverse x plus cos inverse x is a pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x, this is equal to pi by 2. Sec inverse x plus cosec inverse x is also pi by 2. There are 3 identities. We will prove one by one. So, proof of first identity, sin inverse x plus cos inverse x is a 1 by 2. So let prove that sin inverse x, this is equal to 1. First, let sin inverse x is a y. So what is x? X is equal to sin y. Then x also equal to sin cos pi by 2 minus 1. Cos 90 minus theta by sin theta. So x is equal to cos pi by 2 minus y. So this cos को फिर से लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लीजिए cos. तो क्या आएगा आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा pi by 2 minus y. y को भी लेफ्ट साइड ट्रांसफर कीजिए, तो क्या आएगा y प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi by 2. So substitute the value of y. y की जगह हमने क्या किया था, sin इनवर्स x. So sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Similarly, you can prove next 2 identities. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, and sec inverse x plus cos inverse x is a pi by 2. So see the proof of this identity.